Hello friends, how are you all? I have already discussed that we will continue with the grade 7 social science book and we are continuing with the second chapter. This is of the second video and our second chapter name is the regional kingdoms. Now let's begin. Administration in the kingdoms. In the kingdom of the South India, we find a common thread running in the administration of the various provinces. Undoubtedly, the king was the head of the government uh, and the administration. जो king था वो head, he was considered as a head. He was also the commander in chief of the armed forces and he was absolute ruler who took high sounding titles like Maharaja, Dhiraja. ये term we have already discussed, that is called king of the kings, जिसके साथ सामंत वगैरह भी ना साथ में करते थे जॉब. ओके, दे ऑल्सो हैव शेयर विद द किंग्स. आगे है त्रिभुवाना और चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ द थ्री बर्ड्स. Although the king had absolute power, in practice he was helped by various officials. They were also often consulted and their advice was accepted by the ruler. These officials were Samanthas, revenue ministers, senapati, treasurer, chief justice and prohita. They all were helpful. They are helping to the king in various kind of affairs of the court. These functionaries were recruited from the influential families and officials were often hereditary. उस टाइम क्या होता था कि हेरिडिटरी जो है ये जॉब प्रोफाइल सबको मिलती थी. ये नहीं था कि जो कॉमन पीपल है उनमें से ले लेते थे. जो हेरिडिटरी है, जैसे एक फादर ने वर्क किया तो उसके बेटे को, एंड दे हैव टू प्रोवाइड द जॉब टू देयर सन. Samanthas were defeated rulers and their territory were returned to them after they accepted the suzerainty of the ruler. द समंथा प्लेड. सुजरिटी का मीनिंग होता है, ये देखो यहाँ पे गिवन है, द राइट ऑफ द कंट्री टू पार्शली कंट्रोल एन अदर कंट्री. मीन्स किसी कंट्री का राइट होना कि आधे से जो हाफ है, मीन्स कि थोड़ा बहुत जो भी कंट्रोल है वो अदर कंट्री के ऊपर हो जाना. ओके. प्लेड ट्रिब्यूट एंड सप्लाइड ए कॉन्टीजेंट ऑफ ट्रूप्स एंड whenever needed. He attended the royal court with gift and presents. Very often the Samantha were not loyal and were always ready to declare their independence. मीन समंथा जो मोस्ट ऑफ द टाइम होते थे वो एंड ऑफ द टाइम क्या करते थे कि अपना जो है इंडिपेंडेंट वो रूल करने लग जाते थे. बिग लैंडलॉर्ड और द वेरियस चीफ्स वर ऑल्सो कॉल्ड द समंथास. वन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूटा इन द डेक्कन हु वर द सबॉर्डिनेट ऑफ द चौलक्यास. इन्होंने स्टोरी बताई हुई है, एक इंसिडेंट बताया हुआ है जो कि एक वो उसका समंथा का था. द राष्ट्रकूटा चीफ दंतीदुत्रा ओवर थ्रू द चालुक्य ओवर लॉर्डशिप एंड बिकेम इंडिपेंडेंट. ही बिकेम इंडिपेंडेंट. ओके, वो अपने ही मतलब खुद की पावर डिक्लेयर करते थे कि हम राजा हैं. नेक्स्ट है द किंग हैड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट एंड लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. किंग को क्या करना होता था? वेलफेयर मीन्स के लोगों की भलाई के लिए काम करना पड़ता था. ही हैड टू लेड द आर्मी इन टाइम्स ऑफ द वॉर. जब लड़ाई वगैरह हो जाती थी, वॉर का टाइम होता था, ही हैड टू लीड. ओके. द किंग कलेक्टेड रेवेन्यू एंड टैक्सेस फ्रॉम द पीपल टू फुलफिल इज द मालफेरेशियस. मालफेरेशियस मीन्स मल्टीफेरेशियस का मीनिंग है मल्टीपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. द किंग हैड टू प्ले द मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी. द किंग गेव लैंड टू द ब्राह्मण्स, government officials, local chief and tribal leaders instead of cash salaries. Means कैश देने के बजाय जो किंग है they gave land. Okay. The king collected the land revenue and also asked for the contingent of trooping during war. Next, Brahmanas did not have to pay taxes for their lands. The land was cultivated by the laborers. They wrote accounts about the kings and also performed the religious ceremonies. They also brought more land under cultivation. कल्टीवेशन होता है जो खेती बाड़ी करनी है, ठीक है, फसलों को रेज करना, फसलों को उगाना. जो ब्राह्मण्स थे उस टाइम में उनको कोई भी टैक्स जो है लैंड के लिए पे नहीं करना होता था. ओके. जो लैंड को कल्टीवेट करता था वो लेबरर्स थे. ये सारा हमें रिटर्न उसमें मिलता है.
Okay, the peasants, herders, and artisans had to give part of their produce to the king as rent. The trader also paid taxes. जो peasants थे, जो herder थे, artisan थे, लेकिन उनको अपना जो था टैक्स, जो उनका पार्ट था, they have to give. Okay, they had to pay. Next, village was an important unit of the administration looked after by the village headman. The village had various committees to look after the school, local schools, water tanks, temples and roads. The village administration continued on the same pattern till independence. Means village के बारे में बताया, they have told about the village कि village जो था that is important part of the administration. Okay, and it was looked after by village headman. And there were various committees were organized that look after local schools, water tank, temples, roads. Okay, next है गजना विदिस. गजनीज से पढ़ा जाए गजनी. अ टर्किश कॉन्करर था, कैप्चर्ड गजनी नाउ इन अफगानिस्तान एंड फाउंडेड द गजनीविड डायनेस्टी. दिस इज द नेम ऑफ द डायनेस्टी. Sultan Mahmud was the most famous ruler of the dynasty, and the political disunity of the India encouraged Mahmud to invade the India. Mahmud raided India 17 times. जो महमूद था उसने 17 times he attacked the India. This is the time period given 1080 to 1027 AD. What is the meaning of AD? Please comment. He plundered many cities and places. These main targets were wealthy temples. Two of the infamous attacks were on the Kannauj in 1018 and the looting of the famous Somnath temple of the Gujarat is 1025. This is the important and incident that was took place in our India by the Mahmud. He looted our Somnath temple of Gujarat. In the cam- campaign against the Kannauj, he plundered the Mathura and the Kannauj. He also looted there and fabulously reached temple and Somnath without encountering by serious resistance. He could loot and plunder so easily because no strong state existed in the North India at that time. Means उसको looting में, his लूट करने में कोई भी दिक्कत आई ही नहीं. Okay, Mahmud used this massive wealth that he carried from India to build a magnificent city at the Ghazni. ये जो सारा पैसा जो भी था ये लेके वो अपनी कंट्री में जाता था और वहाँ पे जो है अपनी जो कैपिटल सिटी है उसको अच्छे से बना रहा था. Al-Biruni, a great scholar who had accompanied Mahmud Ghazni in his attack in India, has written a book in the Arabic language that was called the Kitab al-Hind, which gives a lot of interesting information about the Indian society and culture. ये जो भी अटैक हुए हैं ये सब लिखा हुआ है, एक बुक है, बुक का नेम है किताबुल हिंद. ओके, जिसमें हमें सारी सोसाइटी उसके कल्चर के बारे में पता लगता है. यह घोरित्स. After 150 years of the Mahmud's invasion, Muhammad of the Ghor attacked India. 150 years के बाद Muhammad Ghor attacked India and laid the foundation of the Muslim rule in India. At the time of the invasion, Rathore of Kannauj, Solankis of Gujarat, Chandels of Bundelkhand, Parmar of Malwa, Chauhans of Delhi, Ajmer were powerful Indian rulers. Capturing Multan in 1175 AD, Ghori moved toward the Gujarat and defeated Solankis, and later he captured Punjab, Peshawar and Sialkot and thus established rule in northern India. ये बताया कि 150 ईयर्स के बाद उसने अटैक किया. ठीक है, जो भी उसने कैप्चर किया जैसे राठौर हो, सोलंकीज हो, चंदेल्स हो, ये सारे उस टाइम में पावरफुल किंग थे. ओके, तो उसने मुल्तान को कैप्चर किया. उसके बाद वो गुजरात मूव किया. उसने सोलंकीज को मीन्स कि हरा दिया. ये सब दे हैव गिवन. ओके, in this return to war, he began preparation to avenge his defeat again in 1192. Ghori led his army against Prithviraj Chauhan. The Rajput army was eventually defeated in the second battle of Tarin and the Prithviraj Chauhan was taken prisoner. उसको पृथ्वीराज चौहान को जो था उसको जेल में डाला गया और उसको मार दिया गया. Okay. Extending his empire in India till Bengal, he placed the affair in the hand of the slave Qutbuddin Aibak and returned to Ghazni. उसने क्या किया, सारा जो भी था अपना राज उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया. ओके, और फिर वो अपनी कंट्री वापस चला गया. On his way back in 1206 he was assassinated while offering his evening prayer. जब वो शाम की प्रे कर रहा था तो उस पर अटैक होता है and he was dead at that time. This was the time period of the 1206 AD.
Thank you.